पानी लेके आई हुई मैं।
हाँ, एक बार लेक्चर देख के कंप्लीट किया है, वहाँ पर भी लगाया। यहाँ पीछे भी देख रहे होगे। ओह नहीं, वो वाला मैंने निकाल दिया। हो गया मेरा वर्क पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, हाँ, और ग्रेविटेशन भी। बस यही 2 चैप्टर हो गया है 11th से, लेकिन वो भी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, तो ना हो गया काउंट कर। मैंने ना वर्क एनर्जी एंड पावर वो सर से, आयुध सर से नहीं किया है। पॉपी पॉइंट्स तो आयुध सर देते हैं ना, मैंने अमन सर से किया है ये वाला। तो ग्रेविटेशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया। सुंदर सुंदर नोट्स हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि रिवीजन नहीं किया है ना। इतने अच्छे नोट्स बनाए है ना। मैं भी यही बोलती हूँ, हर साल बनाती हूँ नया नया नोट्स। शायद अगले साल भी, इंशाल्लाह ऐसा ना हो। मैं पिछले साल करा था। एक सॉन्ग सुनने के बाद पढ़ाई करते हैं, ओके। आई थिंक एस भी सोने चला गया। वो नहीं गया है सोने। If I lived in a house with no mirror.
इजी था बट क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी। किस चीज़ की बात हो रही है? जेई मीन्स का? अच्छा, सेवेंथ फरवरी क्या है? रिजल्ट है क्या? 12 फरवरी, 7 फरवरी? कहाँ गया वो? टेक्स्ट ही भाग गया मेरी आंखों के सामने से। 12 फरवरी, हाँ 12 फरवरी को क्या है रिजल्ट? वैकेंसी वंडर नीट।
मुझे समझ में नहीं आया एलेक्स ने क्या लिखा। एलेक्स कितने बजे उठोगे? 7 to 8 बजे तक। कितने आवर्स सोते हो? बोलो बोलो। मैं शुभम को भी पूछ रही थी कि एलेक्स कितने बजे उठता है, कितने आवर्स सोते हो? पूरी रात नहीं करते, कल संडे है ना इसलिए आज कर रहे हैं पूरी रात। फाइव टू सिक्स आवर्स में हो जाता है नींद कंप्लीट। अच्छे। Let's study, okay?
50 मिनट का सेशन है, लेट्स स्टार्ट। मैं ना टेस्ट को एनालाइज कर देती हूँ, टेस्ट पेपर को फिर। अरे यार कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं। मुझे एक ना चिपड़ी वाली लाइन यहाँ पर चिपकाने का दिल किया, का बोला ना, तो फिर सोचा कि नहीं चिपकाती हूँ, फिर वो फ्लर्ट हो जाएगा ना एलेक्स के साथ। नहीं चिपका रही हो क्या एलेक्स? वरना मेरा बहुत दिल था कि यहाँ पर एक फ्लर्टी लाइन चिपकाऊं। इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स आर हेल्ड ड्यू टू कूलम्स फोर्सेस। हाँ अब पढ़ाई कर भाई तू। लेट्स स्टडी। मैम मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, पढ़ाई रात में ही हो पाती है। आई अप्रिशिएट कि आप काम भी करते हो और पढ़ाई भी करते हो। Electrons in the atoms are held due to Coulomb's forces. Reason. The atom is stable only because. कब का स्टार्ट हो गया? बस तू ही नहीं पढ़ रहा है, जल्दी पढ़ने आ जा। Electron in the atoms are held due to Coulomb forces. The reason the atom is stable only because the centripetal force due to Coulomb's law is balanced by the centrifugal force. Electrons in the atoms are held due to Coulomb's force. The atom is stable only because the centripetal force due to Coulomb's law. Centripetal force. Okay, this one is wrong. Got it. H bye bye. Do you want to quit? No. $25, $19. Electrostatic force is a conservative force. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of an assertion. No work is done when an electron completes a circular or an elliptical orbit around the stationary nucleus of an atom. हाय अविनाश, अभी पढ़ते हो कि सब लोग? वैसे भी हम लोगों ने 30 मिनट का ब्रेक ले लिया, 4 सेशन कंप्लीट करने के बाद। हाँ ठीक है। A hydrogen like atom emits radiation of frequency mu is equals to mu is equals to 2.7 into 10 to the power 15 hertz. Okay. A hydrogen like atom emits radiation of frequency. A hydrogen like atom emits radiation of frequency 2.7 into 10 to the power 15 hertz when it makes a transition from N2 to N1. Okay. The frequency emitted in a transition from N3 to N1 will be N3 to N1. Lambda A equals to H nu.
lambda is equals to hc upon E. Energy is equals to hc upon lambda. हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, ओके, ये दिए फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए। H the wavelength of the radiation. The electron of a hydrogen atom revolves around the proton in a circular nth orbit of radius with a speed. The current due to E5, okay. But current due to circulating charges I equals to E upon T. E to the power 5 हो गया है ना ऐसे। अच्छा ये प्रीमियम है। Resume. Max need pattern test revision. N equals to 2, N equals to 3 to 1.
lambda. Energy equals to your Armstrong mounts, okay? 12,400 upon 9. It is a 9. 9 was a 9. 9 was a 9. 9 was a 9 into 9, 10, 11, 12. 9 was a 9, 9 is 18, 9, 3, 27, and 4 is 36. 9, 13, 9, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. I hate him. 9 plus 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 9 plus 41, 9, 6, 51, 9, 6, 16, 9, 8 से 72. 7 से फिर ये यहाँ पर जाएगा. बहुत बड़ा नंबर आएगा यार. अच्छा ये मुझे फिर से करना होगा कि कहीं देख के कर लूँगी, अभी नहीं. हाइड्रोजन लाइक एटम रेडिएट्स एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन यहाँ पर है तो सॉल्व कर सकते हैं. लास्ट सेट ये वाला कितना किया था? 20 किया था ना. और लास्ट सेट. ओके देन वी आर डन विद दिस टेस्ट. वेयर इज इट? Workout. Where is this? Physics. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 2, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैकेनिक्स में इतना ज़्यादा है मोशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अय्या वर्कआउट रिविजन. हाँ. The total energy of electron in the nth stationary orbit of the hydrogen atom is given by. The total energy of an electron in nth stationary orbit of the hydrogen atom is given by. En is equals to minus 13.6 minus 13.6 Z n square electron volt. If the radius of innermost electronic orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, then the radii of n equals to 2 orbit will be multiplied by 2. 2 3s are 6. 6 10.6 meter in Armstrong.
The radius of innermost electronic orbit of a hydrogen atom. Hydrogen atom. 0.529 into n square upon z. रेडियस z ना हाइड्रोजन एटम के लिए तो 4 n2 4 4 that is 5.3 5.3 into 4 4 5 are 20 4 4 4 4 4 3 12 12 को 2 1 तो कहना 4 5 are 20 21 21.2 212 2.12 2.12 2.12 Armstrong 10 on the here negative 1 to Armstrong. An electron makes a transition from orbit n equals to 4 to n equals to 2 of a hydrogen atom. What is the wavelength emitted by the radiation? 4 1 by 4 minus 1 by 2 4 4 4 है ना 4 4 से 16 16 16 4 4 से 16 3 by 16 16 upon 3r. To explain his theory, Bohr used conservation of linear momentum, quantization of angular momentum. X-rays are produced by jumping of electrons from lower to higher energy orbit of an atom. Electron from higher to lower energy orbit of atom. Electron. X-rays. Lower to higher होगा. Absorption. Absorption. Emission spectrum. Light emit गर्छ. देखिए lower चढ्दाखेरि के पुरा ब्ल्याक हुन्छ अब्जर्भ गरिकिन higher to lower energy. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in a Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength lambda. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength lambda. When hydrogen atom is in its first excited level, the radius is r equals to 0.529 z. And first excited double twice. The de Broglie wavelength of an electron in the nth Bohr orbit related to the radius r of the orbit is lambda n. In a Geiger-Marsden experiment, find the speed of the closest approach of nucleus 7.7 mega electron volt particle before it comes. The energy of a hydrogen atom in its ground state is minus 83. The energy of the level corresponding to the quantum number n equals to 2 in the hydrogen atom is n equals to z रहन्छ n divided by हुन्छ नि त यसको आधी हुन्छ 13 को आधी 3.4 minus 3.4 2 2 6 से 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है 2 6 से 12 वाला. In the experiment of alpha particle scattering, experimentally thin gold foil are preferred over the metals. Gold is ductile metal. Ductile, हाँ ductile है, malleable बोलना है ना.
Which of the following postulates of the Bohr model lead to the quantization of energy of the hydrogen atom? H by 2 pi. The relation between the kinetic energy K and potential energy of the electron moving in the orbit the nucleus is K is equals to minus of K is equals to U by 2. U is equals to total energy into 2. The H alpha line of hydrogen has a wavelength smaller than the HP line. क्या बोल रहा है HP? Okay. Wavelength. जसको वेभलेन्थ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ एनर्जी ग्याप जसको हाइयरदेखि लोवर आउँदैछ नि त्यसको सबैभन्दा कम्ती वेभलेन्थ 1 सबै 5देखि 2 6देखि 2 रहेछ 5देखि 2 रहेछ 4देखि 2 रहेछ 3देखि 2 रहेछ एनर्जी ग्याप जसको सानो त्यसको के हुन्छ वेभलेन्थ ज्यादा ए को 3 बी को 4 in a hydrogen atom of a total energy of electron in a hydrogen atom the total energy of electron is E square total energy of electron is R. If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the If an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be fourth orbit to third orbit. Okay, third orbit 3 square 9 minus 16. 144 9 plus 9 6 54 4 5 9 9 16 से 9 7 से 7 by 144 144 by 7r 144 by 7r और को कति छ भन्दा त 3 गलत हो गए हैं कहाँ से गलत हो गए हैं 3 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्किप किया था Which one of the following Bohr model is not valid? नियॉन एटम हाँ ये तो कर ही सकती थी यार
In an electron, if an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, ये तो रेशियो निकालना है ना. 7r. The corresponding wavelength of the photon will be 20/7. ये तो सेम क्वेश्चन कॉपी में भी है शायद. Where is my copy? If an electron or in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, it emits a photon of wavelength. यही तो क्वेश्चन आया था. NEET 2016 phase 2. क्या रेशियो निकालना है क्या? सेवन बाई 44 ये वाला फर्स्ट एक वाला तो निकाला. 7r/44 वाला 44/7r. हाँ ये वाला किया. अब दूसरा वाला करना है. अरे if an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, 2 square minus 1/3 square r. This will be 4 minus 9 1 4 okay r. Okay, then we have r. 4 9 is 9 9 was 36 4 9s are 36 9 4 36. Okay, this will make 9 is 4 5 36 upon 5r lambda is equals to 36 upon 5r. R is equals to 36 upon 5 lambda. R is equals to 36 upon 5 lambda. Lambda 2 is equals to 144 upon 7 into 36 multiplied by 5 lambda. Okay, 7 1 is 7 7 2 is 14. Okay, नहीं ये देने देते ना. 7 2 7 is 14 2 2 is 4 2 1 is 2 2 8 is 16 2 9 is 18 2 3 is 6 2 6 is 12 36 9 is 9 9 4 is 36 9 4 is 4 5 is 20 lambda by 7 20 lambda by 7 20 lambda by 7 20 lambda by 7. हाँ ये वाला सही है. 20 lambda by 7. Okay, got it.
The total energy of an electron in the nth stationary orbit of the hydrogen atom is given by En equals to minus En, energy in nth state, is equals to minus 13.6 upon n square electron volt. Okay, nth state. हाँ सही किया. If the radius of innermost electron orbit of a hydrogen atom is minus 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, then the radii of n equals to 2 orbit is n equals to 2. तो वो लोग कैसे मार्क्स लेकर आ रहे हैं? n equals to 2 शायद उन लोगों को भी आता है जितना मुझे आता है. n equals to 2. Radius r equals to 0.529 into n square upon z. This is same. This is how much? 5.3. 5.3 into 10 to the power minus 11 multiplied by 4. An electron makes a transition from orbit n equals to 4 to n equals to 2 of a hydrogen atom. What is the wavelength of the emitted radiation? 16 by 3r. 4 to the 16. Got it. What's angular momentum? 6. Okay, X-rays are produced by jumping off. X-rays are produced by the jumping of higher to lower, okay, of electrons from higher to lower energy orbit of electron. X-rays are produced by jumping of electron from higher. Light छोड़ higher to lower energy orbit of atom. Electrons from higher to lower orbit. X-rays. Electron jumps from transition of electron from higher to lower orbit. 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 क्यों X-rays वाला? X-rays. Okay. X-rays. Transition of electron from higher to lower orbit. Higher to lower orbit. Transition of electron from higher to lower orbit. Transition of electron from higher to lower orbit. What is the 20% of? 20% of this pixel. 2 is the 4 7 14. This 49 44. 50% के लिए तो इतना होना चाहिए जरूरी है ना. X-rays are produced by jumping of electron from higher to lower energy orbit of an atom. Okay, got it. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength lambda. Nth orbit of hydrogen atom in Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength. Astaghfirullah. 2 pi r. मतलब सारा Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr's model. Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of Broglie wavelength lambda. NH by 2 pi. क्या था यार? HC upon Delhi. N lambda. अच्छा सर को अच्छा यही तो था. L equals to ima. Circumference of the orbit can be
Consider the electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. Consider the electron in the nth orbit of a hydrogen atom in the Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength lambda. n lambda. अरे माँ कितना पढ़ा था, L equals to n lambda करके पढ़ा था, क्यों भूल जाती हूँ. पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो है. देखो तो L equals to n lambda. बताए थे. Bookmark. Okay. A hydrogen atom is in its first excited level. The radius R is equals to 0.529 n square upon z. 4 times n lambda is equals to 4 pi r. Okay. H line. Okay. Dual nature. इसको फिर से एक और बार किया ना, एटम्स को इन पर मारो एक और बार. न्यूक्लियर डुअल नेचर सेमीकंडक्टर. अभी सेमीकंडक्टर कर लेते हैं क्या पहले, फिर न्यूक्लियर और वो भी कर लेंगे. सेमीकंडक्टर फर्स्ट. बट semiconductors, a small size greater than conductor. Small size greater than conductor. Okay. Wave optics, electrostatic capacitance. Atoms. Semiconductor किसने खोल दिया है फिर मैंने. Atoms nuclei. Electromagnetic waves. Electrostatic potential ना, तो यहाँ पर किया गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. Electric charges and fields. Atoms nuclei. Nope. राइट हैंड ही है.
डाइपोल मूवमेंट की यूनिट, डाइपोल यूनिट की मूवमेंट, हाँ कल ही तो पढ़ा था ना, 1 मिनट रुको, भूल गई। देख कॉपी देख के बताती हूँ। हाँ electric potential and charges. इलेक्ट्रिक डाइपोल कूलम मीटर, ऐसा यूनिट तो डी बाई नहीं है, कूलम मीटर है। CGS में डी बाई होगा शायद। तुमने भी तो गलत बताया, तुमने CGS यूनिट बताया। तो मैंने भी बताया तो कूलम मीटर ऐसा यूनिट। शुभम इन लोगों को बोलो ना कि टेक्स्ट ना करे, अभी पढ़ने का टाइम है। इन लोगों को बोलो सबको, अभी पढ़ने के टाइम पे टेक्स्ट ना करे, सब बोलो। Semiconductor. Semiconductor greater than conductor. Semiconductors are okay, better than conductors. Small size, low power. Semiconductors are better than conductors because they have small size and low power. They consume low power. Okay, low power, small size. Semiconductor better than conductor. Okay, temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. Conductor positive, semiconductor negative, insulator negative. Temperature coefficient of resistance. Conductor positive. Temperature coefficient of resistance. Conductor positive, semiconductor negative, insulator negative, insulator negative, semiconductor negative, conductor positive. Semiconductor better हुन्छ conductor भन्दा, किनकि लो पावर कन्ज्युम गर्छ प्लस साइज स्मल हुन्छ, साइज स्मलर एन्ड पावर पनि कति हुन्छ, लो कन्ज्युम गर्छ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी ना 15 मिनट और है, 15 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक मिलेगा, तो पढ़ो चुपचाप। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अफ रेजिस्टेंस, कंडक्टर को पॉजिटिव हुन्छ, सेमीकंडक्टर को नेगेटिव हुन्छ, इन्सुलेटर को नेगेटिव हुन्छ। ओके, एनर्जी बैंड, पॉल्स एक्स प्रिंसिपल, एनर्जी बैंड को देखो पॉली प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल। forbidden energy gap, FEG, forbidden energy gap, FEG, del
EG conduction band minus valence band. Okay, conduction band में minimum हुनु पर्यो, minimum conduction band को minimum minus valence band को maximum, त्यसलाई के भन्छ del EG forbidden energy gap del EG forbidden energy gap del EG is given by CB. conduction band को minimum र valence band को maximum हुनुपर्छ, conduction band को minimum र valence band को maximum हुनुपर्छ, conduction band को minimum र valence band को के हुनुपर्छ maximum हुनुपर्छ. del EG equals to EC minus EV. del EG equals to del EG equals to CB, conduction band minimum minus valence band maximum, conduction band minimum minus valence band maximum. Semiconductor greater than को हुन्छ, conductor हुन्छ, small size हुन्छ, low power हुन्छ, temperature coefficient of resistance, conductor positive, semiconductor negative, insulator के हुन्छ negative. energy band Pauli's principle, energy band Pauli's principle ले देखो, forbidden energy gap FEG जसलाई del EG पनि भन्छ, del EG equals to conduction band minimum minus conduction band मा चाहिँ के हुनु पर्यो minimum, conduction band को minimum र valence band को के हुनु पर्यो maximum हुनु पर्यो. del EG equals to EC minus EV, conduction band valence band त्यसको बीचको ग्याप के del EG equals to EC to EV. EV को के हो maximum, EC को conduction band को minimum. Okay, del EG forbidden energy gap for silicon is equals to 1.1 electron volt. 1.1 electron volt for silicon को लागि 1.1 electron volt हुनुपर्छ. Okay, del forbidden energy gap for silicon 1.1 electron volt. Okay, forbidden energy gap for germanium 0.7 electron volt. 0.7 electron volt germanium को लागि हुनुपर्छ, 0.75 electron volt. 0.7 electron volt germanium को लागि, silicon को लागि 1.1 electron volt. ये तो याद करने का डेटा है. del EG is equals to 1.1 electron volt for silicon, 1.1 electron volt for silicon. del EG equals to 0.7 electron volt for germanium, 0.7 electron volt for germanium को लागि 0.7 electron volt, 0.7 electron volt, 0.7 electron volt, 0.7 electron volt, 0.7 germanium को लागि 1.1 के को लागि सिलिकन को लागि 1.1 इलेक्ट्रोन वोल्ट सिलिकन को लागि हो. फरबिडन एनर्जी ग्याप सिलिकन को लागि 1.1 इलेक्ट्रोन वोल्ट हुन्छ र जर्मेनियम को लागि 0.7 इलेक्ट्रोन वोल्ट हुन्छ. इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर प्योर सिलिकन र प्योर जर्मेनियम हुन्छ. इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्छ, यिनीहरुलाई के भन्छ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर. एनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ होल्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इन्ट्रिन्सिक के हो प्रपर्टी इन्ट्रिन्सिक चार्ज क्यारियर. नम्बर of electron is equals to number of holes, number of electron is equals to number of holes is equals to number of intrinsic charge carrier. यो के हो intrinsic semiconductor मा number of electron के को बराबर हुन्छ, number of holes को बराबर हुन्छ, number of intrinsic charge carrier ni को बराबर हुन्छ. के प्योर सेमिकन्डक्टर मा सिलिकन मात्रै हुन्छ, प्योर सिलिकन हुन्छ, प्योर जर्मेनियम हुन्छ. के एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, इम्प्योर सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा के हुन्छ भने त इम्प्योर सेमिकन्डक्टर हुन्छ. बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ. एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, इम्प्योर सेमिकन्डक्टर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एन टाइप हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ पी टाइप हुन्छ. पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी र ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी. पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी, ट्राइभ्यालेन्ट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. ओके, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर र इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर हुन्छ. इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ होल्स र नम्बर अफ चार्ज क्यारियर को इन्ट्रिन्सिक चार्ज क्यारियर बराबर हुन्छ. ओके, तीनटै बराबर हुन्छ. ओके, प्योर सेमिकन्डक्टरमा प्योर फर्म हुन्छ. ओके,
एक्सट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टरमा के हुन्छ इम्प्योर सेमिकन्डक्टर, यिनीहरूलाई के भन्छ इम्प्योर सेमिकन्डक्टर। एक्सट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर के हो इम्प्योर सेमिकन्डक्टर हो। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, एन टाइप हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ पी टाइप हुन्छ, एन टाइप र पी टाइप हुन्छ। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, पुरा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ। एन टाइप पनि इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ, पी टाइप पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ, दुईटै इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ के। एन टाइप पेन्टाभ्यालेन्ट हो, पी टाइप ट्राइभ्यालेन्ट हो। पेन्टाभ्यालेन्ट वालाले डोनर इम्प्योरिटी हो, ट्राइभ्यालेन्ट वाला एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीमा नम्बर अफ होल्स ज्यादा हुन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा, डोनरमा या फिर पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्योरिटीमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ज्यादा हुन्छ नम्बर अफ होल्स भन्दा। बट बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्युट्रल, ओके। Intrinsic semiconductor, pure semiconductor at 0 Kelvin, not 0 degree Celsius, okay. 0 degree Celsius हैन, 0 Kelvin मा semiconductor acts as insulator. Intrinsic semiconductor, pure semiconductor at 0 Kelvin, 0 Kelvin मा के हुन्छ semiconductor act as insulator. Semiconductor pure form मा 0 degree मा हैन, कतिमा 0 Kelvin मा, 0 degree हैन 0 Kelvin है, ओके। 0 Kelvin मा के हुन्छ इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ। एट रुम टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर एज कन्डक्टर, रुम टेम्परेचरमा सेमिकन्डक्टर के हुन्छ कन्डक्टर जस्तो बिहेभ गर्छ। एट रुम टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर एक्ट एज कन्डक्टर, रुम टेम्परेचरमा सेमिकन्डक्टरले कन्डक्टर जस्तो एक्ट गर्छ। एनई इन सिबी इज इक्वल्स टु एनएच इन भिभी। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल्स टू नम्बर अफ होल्स इन भ्यालेन्स बैंड। जतिवटा भ्यालेन्स ब्यान्डमा जतिवटा भ्यालेन्स ब्यान्डमा होल्स छ त्यतिवटा के हुन्छ एनएच इन भ्यालेन्स ब्यान्ड। जतिवटा होल छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा त्यति नै के हुन्छ कंडक्शन बैंडमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। एनी इन कंडक्शन बैंड एनएच इन भिभी। थैंक यू डार्कनेस गेमिंग। अभी पढ़ते हो क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर हो, 0 केल्विन में के हुन्छ सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। एट रूम टेम्परेचर में के हुन्छ सेमीकंडक्टर एक्ट एज कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के जस्तो गर्छ बिहेभ गर्छ कंडक्टर जस्तो बिहेभ गर्छ। नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल्स टू नंबर अफ होल्स इन भ्यालेन्स बैंड, ओके। मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन ज्यादा हुन्छ होल्स को भन्दा, मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी अफ होल्स। मास एक्शन ल, Mallis law at equilibrium, Ni square is equals to Nh into Ne, Ni square is equals to Nh into Ne। यसले कसले भन्छ Mallis law भन्छ, mass action law पनि भन्छ। mass action law और Mallis law, Ni square is equals to Nh dot Ne, Nh dot Ne, Nh dot Ne। sigma conductivity conductance, रो रेजिस्टिविटी आर रेजिस्टेंस, ओके। सिग्मा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भन्छ, आर रेजिस्टेंस हो, रो के हो रेजिस्टिविटी हो। Oh my goodness, don't comment like that, let me study। शुभम energy band for p and n type semiconductor, energy band for p and n type semiconductor, energy band for p type plus n type को semiconductor, ओके। p type मा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यता के छ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भिभी सिबी। सिलिकन को लागि कति हुन्छ 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ, जर्मेनियम को लागि 0.7, ओके। 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ, जर्मेनियम को लागि कति हुन्छ 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट कति हुँदो रहेछ 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट, ओके।
0.7 electron volt for germanium. Valence bond n type. Okay. Donor impurity हो, acceptor impurity. Band कहाँनिर हुन्छ n impurity को डोनर इम्प्योरिटी हो, त्यसै कारण कन्डक्सन ब्यान्डको छेउमा छ डोनर इम्प्योरिटी. पी टाइपमा के हुन्छ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो, त्यसै कारण कहाँ छ भ्यालेन्स ब्यान्डको छेउमा छ, भ्यालेन्स ब्यान्डको छेउमा छ. ओके. Absolute zero temperature means 0 Kelvin. Okay, 0 Kelvin. Absolute zero temperature means 0 Kelvin. Semiconductor in room temperature. Valence band partially empty, conduction band partially filled with the semiconductor in room temperature. Valence band, okay, partially empty हुन्छ, conduction band partially filled हुन्छ. Okay. Diffusion current milliampere. Direction of diffusion current P देखि N पट्टि जान्छ, P टाइप देखि N, P पेन्टाभ्यालेन्ट देखि हैन ट्राइभ्यालेन्ट देखि पेन्टामा जान्छ, ट्राइभ्यालेन्ट देखि पेन्टामा. ओके. डिफ्युजन अफ करेन्ट मिलिएम्पियर. डाइरेक्सन अफ डिफ्युजन अफ करेन्ट, डिफ्युजन करेन्टको डाइरेक्सन P देखि N पट्टि हुन्छ. ओके. ड्यू टु मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले, कसले गर्दा भएको मेजोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा भएको. यो मलाई फेरि फिर पढ्न परेको यो वाला. ड्रिफ्ट करेन्ट ड्यू टु पोटेन्शियल डिफरेन्स. डिफ्युजन करेन्ट चाहिँ कसको कारणले गर्दा भएको हो, due to majority charge carrier. Diffusion current is due to majority charge carrier. Drift current is due to potential difference. Drift current को कारणले गर्दा भएको, potential difference को कारणले गर्दा भएको ल. Drift current is due to potential difference. After formulation of PN junction, P type, N type. P type negatively charged, N type positively charged. माइक्रोएम्पियरमा हुन्छ. डिफ्युजन करेन्ट मिलीमा हुन्छ, ड्रिफ्ट करेन्ट माइक्रो मिली. डिफ्युजन ज्यादा हो त ड्रिफ्ट करेन्ट त कम्ती छ त. माइनोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दाखेरि भएको. ड्रिफ्ट करेन्ट माइनोरिटी चार्ज क्यारियरले गर्दा भएको. Diffusion current by majority charge carrier. Neutral region, electric field setup. Barrier potential exists, del V. On moving in the direction of electric field, barrier potential decreases. Lower but constant potential. Potential decreases due to electric field setup. High potential.
सोलर सेल। मुझे काफ़ी ब्रेक की ज़रूरत है भाई। तुम कितने बजे तक रहोगे? तब तक ही करेंगे। अभी ऐसा मत बोलो, मेरा सेमीकंडक्टर पूरा बचा है।
और मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कर जाती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? आई हैव टू स्टडी। स्पेशियस है ना? काफ़ी स्पेशियस लगा मुझे। ब्रेक, यस, ब्रेक ख़त्म होने वाला है।
I think we should sleep. Bye bye. Good night.